Well, they say that a goal leads to success or failure, but a process leads you to the goal. क्या डीप थॉट है, राइट? सो इसी के साथ आज हम शुरुआत करेंगे. हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निहारिका एंड आई एम बैक अगेन टू टॉक टू यू अबाउट अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ ई कॉमर्स. एंड बाय डिफॉल्ट हम ये टॉपिक मिस नहीं कर सकते, नहीं तो आप बोलोगे निहारिका ने बताया ही नहीं. ऐसे कैसे चलेगा, राइट? Well, now, if we've been able to understand one thing all through my interactions with you in these videos, it is that e-commerce is built heavily on the right processes. And like I mentioned, those very processes lead to the goal of customer satisfaction. Of the many things that we've discussed till now, from supply chain operations to first and last mile delivery to cash collection, the process of returns is as important. Let's talk about that. Returns happen when the customer returns a product or when it becomes misrouted, or perhaps delivery has been unsuccessful for any other reason. So आसान भाषा में रिटर्न का मतलब है प्रोडक्ट की घर वापसी. और ये रिटर्न प्रोसेस कई तरीके के हो सकते हैं. So we can have RVPs यानी रिवर्स पिकअप और कस्टमर रिटर्न. Then we have RTOs यानी रिटर्न टू ओरिजिन. प्री-एक्सओ या प्रोडक्ट एक्सचेंज भी एक तरीके का रिटर्न हो सकता है. और फिर होते हैं पीआरटीओ यानी पार्शियल रिटर्न टू ओरिजिन. इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल्स जरूर बताऊंगी, लेकिन थोड़ा बाद में. पहले आई नीड यू टू अंडरस्टैंड स्मार्ट चेक्स. अब स्मार्टफोन के जमाने में प्रोसेस को भी तो स्मार्ट होना पड़ेगा, राइट? सो आई टॉक यू अबाउट स्मार्ट चेक्स फर्स्ट. कोई भी रिटर्न प्रोडक्ट या आइटम को कस्टमर से पिकअप करते समय डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स को एक जिम्मेदार नागरिक की तरह उन्हें स्मार्टली चेक या वेरीफाई करना चाहिए. और ये वेरिफिकेशन दो तरह से की जा सकती है. Now, there is a pass or a fail check where the executive must do an image check, check for damages, and all of that. Now, this check usually has 3 steps. First, you will check the name, okay? Then you will check instructions, and then you will check the result. इसके अलावा एक और स्टेप है विच इज नोन एज द वैल्यू वैलिडेशन चेक, जहां आपको इन सब चीजों को चेक करना पड़ेगा, जैसे कि IMEI वैल्यू, MRP वैल्यू एंड मच मोर. अब जांच पड़ताल करने के बाद जब मन को तसल्ली हो जाए तो रिटर्न प्रोडक्ट को वेयर हाउस या वेंडर के पास रवाना कर दिया जाता है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ रिटर्न दैट इट इज. एंड नाउ टू आंसर योर क्वेश्चन ऑफ व्हाट ईच टाइप ऑफ रिटर्न मींस, चलो देखते हैं. लेट मी टॉक टू यू अबाउट दैट नाउ. RVP or reverse pickup signifies the return of a product generated by a customer after they receive it. अब इसके बहुत सारे reasons हो सकते हैं, but that's a conversation for another day, so we won't get into that right now. Now, there can be usually 4 types of RVPs, including pickup, replacement, misshipped और pre-exo. अब आते हैं RTO पे. RTO का मतलब होता है Return to Origin. जब कस्टमर्स बिना बॉक्स को खोले या सील को ब्रेक किए प्रोडक्ट को वापस करते हैं तो हम उसे रिटर्न टू ओरिजिन कहते हैं. इसकी वजह मिस रूट या रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव्ड हो सकती है, और कुछ केसेस में अगर लगातार 3 अटेम्प्ट्स तक कस्टमर्स अपनी डिलीवरी नहीं ले पाते हैं तो हम उसे रिटर्न टू ओरिजिन के अंदर प्रोसेस कर देते हैं. We have another type of return which is called the partial return to origin or PRTO. Now, this is mostly applicable to grocery items. And grocery items में अक्सर multiple orders होते हैं, and if the return is initiated item wise, it becomes a partial return. Each moving part of the e-commerce industry is like a journey. It's like a process in itself. And often, just like in life, we have to trust what the process says. तो अब तक हमारा process हमसे कुछ ये कहता है. A customer first receives a damaged or a defective product which does not match the demanded specifications. They then request for a reverse pickup either by contacting customer care or by applying through the app. Now, the delivery executive then comes with the new product for replacement. The executive checks the product as per the checklist and initiates the replacement. Here, the customer is also suggested to keep the packing material available. And finally, वापस किया हुआ product हब में वापस लाया जाता है. Now, this is what a simple replacement process looks like, but I spoke to you about pre-exchanges as well, right? So, kabhi-kabhi, the process for pre-exo can be slightly different with minor additions or subtractions here and there. Pre-exo ka matlab hai exchange offer, where many a time people prefer to buy a new product before disposing of an older product. So, either customers pehle order place karenge with an offer of exchanging an old product. And they will provide the details of the old product while placing the order, such as the model, IMEI number, condition of the product,
दैट इज वेदर इट इज वर्किंग, नॉट वर्किंग, पार्शली डैमेज्ड या फिर कुछ और। अब कस्टमर की तरफ से ऑर्डर कंफर्म हो जाने के बाद उनके पास एक ऑटोमेटेड ईमेल और एसएमएस पहुंच जाएगा। एंड पोस्ट दिस द डिलीवरी हब विल शेड्यूल द पिकअप फ्रॉम द कस्टमर्स प्लेस। And like always, the delivery executive will pick the exchange product only if it passes the necessary checks. Thumbs up, all good, samajh aa gaya, right? Perfect then. If you've understood, well, that's all that I wanted. And my phone alarm is ringing. बिल्कुल स्कूल की बेल की तरह अलार्म बजा है आज, मतलब कि जाने का टाइम हो गया है. So before the next session, make sure to brush up on today's information about the various kinds of returns, types of smart checks, different types of returns, and replacement and pre-exo processes. और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, right? Like always. See you soon.